Namaste everyone. Welcome to the first episode of the Yekjah Show. I'm your host Akshay Raina, and the first guest that we have today is Dhairya, and she's currently writing a thesis, interestingly, on Kashmiri Pandit genocides that happened in 1990. Welcome, Dhairya. Let's start with a little introduction about you and how did you decided to write a thesis on Kashmiri Hindus in the first place. Okay, hi, I'm Dhairya. I'm a student of Jamia Milia Islamia, and I'm here. I'm thankful to you, Akshay, for having me here. And Yeah. so, talking about my topic finalization was a very interesting story. So, I had a couple of topics in mind. Okay, and one of them was the marriage age get increasing. There was a lot of debate going on at that point in time, and this was, I think, in November or December 2021. Right. Wherein we were asked to write these theses, and we were asked to sort of come up with our own topic, and then we were supposed to discuss it with our coordinator. Right. So one topic was this. The other topic I just came across at that point in time, and that back then in December, I think a lot of there was a lot of trend about Kashmiri Pandits that was going on, and and suddenly, while just going through the trends on Twitter, I got to read about BK Ganju and how his wife was actually fed blood-soaked rice, and he was killed in the attic. So I said, ये दो topics तो मतलब मेरे लिए काफी अच्छे हैं. And then I went to my coordinator to ask him, if one of the two topics can be selected. Now, interestingly, my coordinator is a Kashmiri Muslim. Okay. And both the topics were actually very touchy for him as well. Because for marriage aid, he said that, you need to make sure that, the government of India needs to, assure all the population that 21 years ki age tak, they will take the responsibility of nutrition of the children, like the people, or the kids who are supposed to touch that age bracket. Right. तो तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रिशन इनका स्पॉन्सर करना है. तो he got a little, he was okay, not okay. He was on the fence. Right. Then I came up with this topic about the genocide of Kashmiri Pandits. अब तब तक मुझे कुछ चीजें पता थी, लेकिन सब कुछ डिटेल में नहीं पता था. ये हमें तो सिखाया गया ही नहीं है. सबसे वर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर ये है कि हमें जो हमारे साथ जो एट्रोसिटीज हुई है वो हमें नहीं बताई गई है. आज भी कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता है. So at that point in time, he said that, listen, but you need to bring out a balanced view. I said, how do I bring out a balanced view on something that is so brutal? मतलब अगर आप गिरजा टिक्कू की आप स्टोरी पढ़ोगे तो you will realize there was nothing about being balanced. मतलब जो हुआ उनके साथ वो हो गया. या बीके गंजू के बारे में, या टीकालाल टपलू को जिस तरह से मारा गया था टेररिस्ट से, या यासीन मलिक को वहां पे पोस्टर बॉय बनाया गया था. There is no balanced view. Like, you can't say that every now and then, you can't say that, oh my God, so and so was a son of a poor farmer and that's why he became a terrorist. There was a little bit of an argument, and then I said, I am going ahead with this topic. And finally, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये पूरे क्लास के सामने डिबेट हो रही थी. Right. So he also could not, hold his reservations, or he did not want to hold his reservations, but he actually asked me to put one point in the thesis, which was actually, when I started researching about it, it came across to be like, it did happen at all. He said that, वहां पर जब genocide हो रहा था, जब भगाया जा रहा था कश्मीरी पंडित्स को, make sure you include the point that the Kashmiri Muslims helped the पंडित्स. अब मैंने जिनको ये बात पूछी, वहां के लोकल्स को भी ये बात पूछी कि आपने कभी हेल्प करी थी, आपके घर के लोगों ने कभी हेल्प करी थी. The only answer I got was no. Okay. Right, loud and clear. So without loud and any... clear. The message was loud and clear कि नहीं भाई, हमने हेल्प, हमारे लोगों ने हेल्प नहीं करी थी. And
there were some people like Sajid Yusuf who said that, we actually need to apologize to our Hindu brothers over there in the valley. Yeah. So, yes, that's how the topic Right. was So I think decided. Sajid Yusuf, though, he's also very vocal on this on Twitter as well. Yes, yes, yes. He's To very be vocal, fair, yeah. very vocal. And then there was Sahil Bhatt, who had hosted our Indian Tricolor along with Right. Sajid. I think Mm-hmm. 26 January को हुआ था after the abrogation of Yeah. 370. Yeah. Yeah. So it तो was in, I think, 2020. Yeah. yes. तो ये इन लोगों से भी मेरी बात हुई थी, नॉट दैट कि नहीं हुई थी. तो Mm-hmm. ये लोग मेरे काफी अच्छे सोर्सेस थे लोकल कश्मीरी, क्योंकि मुझे भी बोला गया था कि वहां पे आप लोकल कश्मीरी से भी बात करनी होगी आपको. So I said, chalo, like if you're doing something, then let's get into it properly. Mm-hmm. So yeah. Correct. ठीक है. So now that you finalized your topic at this point, so how did you go about your research? एक तो हो गया कि आपने you reached out to the Kashmiri Muslims as well. You Yes. reached out to some Kashmiri Pandits also as well, Yes. जो who were either first-hand victims or उनकी family में कुछ रहा होगा, either their Yes. grandparents or somebody who might have been killed. So Yes. how did Kashmiri Pandits came into all this spectrum? कि किन किन को आपने reach out किया? Primary source of research क्या था आपका? मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च ना, पहले तो मुझे रियलाइज हो गया था कि मतलब जस्ट इंटरव्यूज लेके कोई मतलब नहीं है. आई हैव Right. टू हैव a few references from the books as well, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित्स की जो स्टोरी है ना, वो पूरी लेयर्स में है. मतलब Right. कभी कोई इनको ब्लेम करता है, कभी कोई उसको ब्लेम करता है, कभी कोई इसको ब्लेम करता है. मतलब इट्स ऑल अ ब्लेम गेम काइंड ऑफ अ थिंग. तो अगर Right. वो लेयर्स मुझे कवर करने हैं, आई ऑल्सो हैव टू रीड अ बुक. एंड आई जस्ट रेड वन बुक, क्योंकि मेरे पास 2 ही महीने थे मतलब बनाने के लिए, थीसिस Right. बनाने के लिए. दैट वाज बाय जगमोहन, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन My कश्मीर. yeah. तो वो रीड किया था मैंने. एंड द कश्मीरी पंडित्स एक्चुअली उस टाइम पे, इवन इफ यू रिमेम्बर, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म भी आ रही थी, जी. द Kashmir कश्मीर Files. फाइल्स. हाँ. तो उस वक्त ना आई रीच्ड आउट टू आदित्य राज कौल वाया somebody. Okay. So he was the first person who said that, I'll I said I need your interview. And then he gave me a few other contacts as well. Right. And by the end of it, मैं बोल रही हूँ ना, I got really emotional by the end of it. Like when I finished the thesis, like I knew half of the community so very well that, and then they showered me with a lot of love and affection. मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं कश्मीरी पंडित ही हूँ. मतलब धैर्य is from our community only. जी. So yeah, I mean, that was, I got a bit emotional when the thesis were about to end, but yeah, that's how it is. Okay. So at this point in time, आपका research complete हो गया है, आपका thesis complete हो गया है. You sort of jolted down all points. उसको एक पूरा structured way में आपने बना दिया है. Then and ये अभी time frame आपके पास कितना है before you actually go and present your thesis to the team? मैंने ना एक्चुअली क्या किया था कि मेरी थीसिस जब मैंने लिखना शुरू किया ना, मतलब मैंने प्लान करना शुरू किया ना, आई हैड गिवन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज टू एवरीथिंग. लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे जगमोहन के बारे में लिखना है, ठीक है, आई मेड श्योर दैट आई आस्क दीज क्वेश्चंस इन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज एज वेल. फिर चाहे वो आदित्य राज कौल हो, फिर चाहे वो महेश कौल हो, डॉक्टर महेश कौल, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेसर, या फिर चाहे वो साजिद यूसुफ हो या फिर कोई भी हो, इमाद मखदूमी वाज आल्सो वन ऑफ देम. सो मतलब मैंने ना वो टाइम फ्रेम जॉट डाउन करके रखी थी. सो लाइक द फर्स्ट पीपल टू गेट जीरो डाउन करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए मैंने 10 दिन रखे थे अपने लिए, सेइंग कि, और मैंने आदित्य राज कौल से ही बात की थी कि मतलब आई need a lot of help from people around. कि मतलब ये नहीं होगा कि कि मैं आज ही सब कुछ ले लूं and then in one shot में सबसे ही बात कर लूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, हमें questions email करिए. The best to speak to were Lalit Ambardar, Amit Rana. They were amazing people with so much of information in them. With them, like even Lalit Ambardar is somebody who will give you so much of information. He has that amazing brain. Like I don't know, मतलब वो intellect देख के ही मतलब उनका मुझे
बड़ा उनसे बात करने की Right. बड़ा I मजा think आया। most of the people that you meet in that they are just in that zone. They are very, and in fact, they have studied everything. They know everything. They have Absolutely. done a lot of research on this front also. So even Aditya Rajkol, he's been a very frequent researcher. Even now, he visits Kashmir a lot of times. Of Yes. course, because of his commitments and other stuff. But Yes. they know a lot about it, and they know in and out of everything. Yeah. So they are a very reliable resources जिन पे आप कर सको डिपेंड कि हाँ पे इनका रिसर्च इज समथिंग दैट यू कैन काउंट ऑन. राइट। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ था उस वक्त, एक वक्त ना, आई रिमेम्बर विवेक अग्निहोत्री जी कमिंग ऑन ट्विटर स्पेसेस, and I was given the mic to ask a ओके. question, and I just introduced myself and said that I am Dhairya Ingle, and I am actually writing thesis on this topic. So आप राइट. मानेंगे नहीं कि मतलब अगला 1 घंटा पूरी मेरी थीसिस डिस्कस करने में ही गया कि मतलब मेरी थीसिस कैसी होनी चाहिए. सो राइट. आई राइट. गॉट लाइक द फ्रेम, जो बोलते हैं ना कि आउटर लेयर, आपका जो लेयर, जो आई मीन हाउ डू यू से स्ट्रक्चर, आउटर लेयर में ना राइट. स्ट्रक्चर आपको मिल ही गया था हम्म. with the guidance of these kind of people. And then Dr. Mahesh Kaul helped me out a lot. He gave me a few books. उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने कुछ लिखी हुई बुक्स भी बताई जो मुझे ऑनेस्टली रीड करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 महीने थे मेरे पास. सो राइट. आई इवन हैड टू राइट. ओके. राइट. और सबसे वर्स्ट पार्ट इसमें क्या हुआ था कि लाइक इवन इफ यू डिवाइड योर थीसिस अकॉर्डिंगली, लेकिन वो जो ब्रूटैलिटीज लिख लिख के, या व्हेन यू टाइपिंग समथिंग अबाउट गिरजा टिक्कू, it takes a toll on you emotionally. I don't know सबके लिए होता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन I या am a या very emotional person. So I started getting those pangs कि मतलब I don't know क्या हुआ होगा, and then you just take a break, like you write one page and you take a break, you write one page and take a break. So मतलब वो thesis लिखने में मेरा at least नए करके around, I would say, more than 30 days चला गया था. I'm summarizing everything now. This is the most important part, जहाँ पर मतलब आपके पास इतनी सारी information है, but putting it out and dividing the chapters is equally important and equally difficult. राइट. It's easy and difficult both. क्योंकि as I mentioned earlier, ये कश्मीरी पंडित्स की स्टोरी में ना, मतलब ये स्टोरी एज इन जो जेनोसाइड वाला पूरा एपिसोड है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है. राइट. पूरी हाँ. कम्युनिटी के साथ 7 बार जेनोसाइड हो चुके हैं. दिस वाज 7th जेनोसाइड. सो ये चीजें लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि मतलब आई हैव आई एम लाइक emphasizing on those genocides as well, but at the same point in time जो अभी जो लास्ट जो हुआ उसका इम्पोर्टेंस मैं कम नहीं कर रही हूँ. सो पूरे मतलब छोटे से इसमें मैंने 5 या 6 पेजेस में मैंने ये दे दिया कि मतलब about the 7 genocides, and I once again had the privilege of talking to various people on this, like including Lalit Ambardar and Dr. Mahesh Kaul and everybody, Amit Raina. So वो लोगों ने मतलब मुझे इन 7 genocides के बारे में, मतलब सबके बारे में बताया. और मैंने इंटरनेट से भी काफ़ी कुछ सोर्सेज में मैंने पढ़े थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये तो नहीं है कि मतलब सारे प्राइमरी सोर्सेज जो मैं खुद रिसर्च करने जाऊँ, ऐसा नहीं था. मैंने कुछ कुछ चीज़ें इंटरनेट से भी ली थी. और दैट्स हाउ अ रिसर्च इज. मेरे हिसाब से तो दैट्स हाउ अ रिसर्च इज. And you take information from 10 different sources, or then you start dividing the chapters. अब डिविजन ऑफ चैप्टर्स में भी मेरी मदद जो डॉक्टर महेश कौल ने की है वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो दैट 370 वाला पार्ट भी दिखाना था मुझे, मतलब बताना था. मीडिया का रोल भी दिखाना था मुझे कि उस वक्त मीडिया ने कैसे जस्टिफाई किया था. लाइक इफ वी रिमेम्बर, बरखा दत्त ने ये कहा था कि genocide happened because of the elitist mentality of the Kashmiri Pandits, which is absolutely wrong. Which is absolutely wrong. कि वो टाइम पे उन्होंने ये बोला था, and she is a very well known journalist, but I do not adhere with whatever she said. कि मतलब कश्मीरी पंडित्स अब educated है, तो we if there's somebody who's a 10th pass and there's somebody who's a doctor, obviously a doctor will get a better salary and a better job as compared to somebody who's just
10th पास और 9th Right. पास. Right. तो I think वो ये जी. sorry to cut, but क्या है ना, I think what I have understood इसमें ना, ये if you remember जो मोपला राइट्स है ना, there also they give the same justification कि it was a peasant landlord sort of riots. So all the moplas they killed all the Hindus just because they were oppressed by the wealthier landlords. So यार एक this बात is बताओ, मतलब गलत किसके साथ नहीं होता? आई एम नॉट सेइंग कि मतलब होना चाहिए, ठीक है. right. कश्मीरी पंडित्स के साथ, पूरी कम्युनिटी के साथ आपको 7 जेनोसाइड्स हुए, फिर भी Correct. एक कश्मीरी पंडित को देखा पत्थर उठाते हुए? Of कभी course. एक कश्मीरी पंडित को देखा ये बोलते हुए कि नहीं, जाके इनको मार दो, इनके No. तो घर तक ले लिए गए हैं, Right. डिस्ट्रेस सेलिंग हुई है इनके घर की, ओके. Right. इनके घर पे मतलब यहाँ तक ये इतनी सारी चीजें हुई है कि मतलब आज के डेट में भी अगर वहां जाए, अगर कश्मीरी पंडित अपने घर पे जाए, ठीक है, तो इनके यहाँ पर ये होगा कि मतलब दोस पीपल डोंट वेलकम देम, एंड देन दे लुक एट देम एज स्ट्रेंजर्स, कि मतलब ये लोग जल्दी जाए यहाँ से, या फिर मतलब उनको है ना सटल वार्निंग्स देंगे कि भैया मतलब यहाँ से निकल जाओ, ये एरिया अब आपके रहने लायक नहीं है. आपको सटल वार्निंग्स आज भी ऐसी मिलती है, तो इमेजिन एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या होता होगा. सो Right. मतलब गलत तो जितना पंडित्स के साथ हुआ है, 7 जेनोसाइड्स इज व्हाट, 7 जेनोसाइड्स, इससे ज्यादा गलत और किसी के साथ क्या होगा यार. सो आई मीन मुझे तो मतलब ये भी बोला गया था कि मतलब एक ट्विटर डिबेट में बोला गया था कि भैया यू नो अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे मुस्लिम ज्यादा मारे गए हैं. एंड आई हैड अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट कि भैया मेजोरिटी में आप लोगों तो आपके नंबर्स तो ज्यादा ही होंगे ना. जो मेजोरिटी में अगर आप 100% हो, ओके, तो आपके Right. नंबर्स तो ज्यादा ही होंगे. 100% नहीं, हम जस्ट सेइंग 100 लोग हो और यहाँ पे 5 लोग हैं, 100 वर्सेस 5 का रेशो है या 100 वर्सेस 20 का रेशो है, तो Right. आपके नंबर ज्यादा है, तो आपका तो Correct. मतलब ज्यादा ही रहेगा. मतलब बट हु इज किलिंग देम? आर दीज द पंडित्स हु हैव, आई मीन हु आर Absolutely. किलिंग देम? नो. एंड व्हाई आर दे गेटिंग किल्ड? फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म. आज के डेट में अगर सपोर्टिंग या फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, अब ऐसे कितने सारे कश्मीरी मुस्लिम्स है जो आर्मी में भी भर्ती है, ठीक है, उनको क्या कोई इस्लाम के नाम पे कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता. उनकी फैमिली को कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता. हु इज किलिंग देम? इट्स नॉट द कश्मीरी पंडित्स हु आर किलिंग देम, ओके. Correct. अभी तो है ही नहीं कश्मीरी पंडित्स वहाँ पे कुछ तो a naive एब्सोल्युटली. statement anyways. सो मतलब आई एम टोल्ड अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स, बट you know you can't justify violence with something like कि oh my god we were oppressed, ठीक है. ये तो मतलब बात बहुत गलत है. ये मतलब मैंने वो जो टेररिस्ट मारा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 में, Yeah. बुरहान वानी. बुरहान वानी, he was a son of a poor teacher of a poor farmer, okay. Right. What ये justification are you giving me? करेक्ट. आई थिंक ये दो तीन स्टेटमेंट्स जो है ना, दिस इज जस्ट ऑन, ये हर बार उनको, दीज आर ऑन टिप ऑफ देयर टंग. कुछ भी होगा, इधर ही इज सन ऑफ अ वेरी लोअर, हु कम्स फ्रॉम अ लो बैकग्राउंड या पुअर बैकग्राउंड, कोई टीचर है बहुत मजबूर सा. बहुत दिस मजबूर दिस सा इज है. जस्ट समथिंग दैट इज, दे कम विद दीज एब्सर्ड स्टेटमेंट्स एवरी टाइम देयर इज समथिंग लाइक दिस हैपेंस. एब्सोल्युटली. और ये मतलब जस्टिफाई भी नहीं कर पाते कि ये बात को कि मतलब कि अच्छा इसलिए इसने हथियार उठाए. कम ऑन, मतलब आई. राइट. Cool. So, okay. So now that your thesis is going on, now It's complete. what? Yeah. So Yeah. now it's complete, and now it's the time when you are actually going to present the thesis to your faculty, right? I mean, I have already submitted my thesis and now I'm Mm-hmm. waiting for my result. Okay. Right. अब देखते क्या होता है, क्योंकि there was a lot of opposition. Let's just say कि मतलब you know जो टॉपिक मैंने लिया था वो आई एम सो श्योर एटलीस्ट 70% लोगों को नहीं पसंद आया. आई एम Right. सो श्योर. मतलब जिस हिसाब से मेरी बातें हुई है, मेरी वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हुई है कॉलेज में और कॉलेज के लोगों से, मुझे इनफैक्ट आदित्य राज कौल ने, ललित अंबरदार ने,
Amit Raina ne, they had told me very clearly कि Dhairya, it is very likely that your thesis are going in the dustbin. क्योंकि a very long time ago, Aditya Raj Kaul ki cousin wanted to write something like this. Okay. A very long time ago, I think 10-15 years ago, or ऐसा कुछ somewhere like very very long time ago, when we were still kids. So the thesis, these thesis topic was actually the topic was actually given to the professor. और प्रोफेसर ने कहा कि what the hell, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. This is not the topic that you're going to write on. So versus आज जहाँ पर मतलब I was very stubborn in saying कि नहीं मैं यही कर रही हूँ, आपसे जो होगा वो कर लो. And I did not say these exact words क्योंकि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि you will not write this. I just said that no, this is fine. I think I'll go ahead with this. Have they countered you on any facts that you have presented? मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसपे उन्होंने क्लेम किया है कि ये देखो तुम ऐसा बता रहे हो जबकि ऐसा नहीं हुआ था, ये है उसका फैक्ट है. Have they fact checked your claims? On They what haven't, basis? to be very honest. They haven't. Yeah. क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपकी जो इंटरव्यू के जो सोर्सेज लिखते हैं, मतलब आपके जो सोर्सेज आपके किसको उसको इंटरव्यू लिया, किसका इंटरव्यू लिया है, वो जब आप लिखते हैं ना, तो when you write names like Aditya Raj Kaul, Lalit Ambarkar, and then give out the names of the books that you've referred to, तो वो चीजें ना काफी मतलब ऐसा नहीं है that I have taken things from nowhere. Okay, I have, if I've said that मोपला हुआ था, तो then I have given enough evidences, newspaper clippings उस time के, a few interviews जिनके family में ऐसा हुआ था. In fact, I had interviewed a family member of a rape victim. There was somebody else from I cannot say it here, but there was somebody else from the defense as well who actually gave me all the information जहाँ पर ये सब चीजें हो रही थी. So they could not counter me as much. I don't know if they want to, if they do not want to, if they want to counter me, on what basis will they counter me, मुझे नहीं पता. लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि फिलहाल अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मतलब जहाँ पर मैं शॉक हो जाऊं. मतलब मुझे मेरा जब रिजल्ट आया था तब मेरा सिर्फ सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है. फोर्थ सेमेस्टर जहाँ पे मैंने अपियर किया हुआ है उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया हुआ है. सो मेरा माय रिजल्ट सेज फेल. लेकिन जब तक मुझे फोर्थ सेम का रिजल्ट नहीं मिलता, लाइक द करेक्टेड कॉपी ऑफ द रिजल्ट, आई कांट से दैट आई हैव बीन टारगेटेड. लाइक फॉर नाउ आई कांट से दैट. Okay. Yeah, fair enough. So, Dhairya, there is what plays a very big role in all of this is the support that you get from your colleagues, from your friends. Within my class. Yeah. Within my class, I don't interact with too many people. Okay, I do not, since it's a distance learning course, it's only a hi-bye kind of a thing. Okay. But I mean, the people don't care, basically. तुम जो करो करो, people don't care. But yes, I would definitely like to thank my parents and my brother for this one, because they were always the ones who kept me going and pushing. तुम्हें अगर तुम ये कर रही हो तो ठीक से करना. The first sentence that came from my mom was that that this is a very very sensitive topic which is not known to all of us, क्योंकि मीडिया में तो ज्यादा आया नहीं था उस वक्त. Right. तो अगर करना ही है तो ठीक से करना, वरना नहीं करना. मतलब do full justice to it. So I would like to thank my parents for this, कि मतलब उनका जो support था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा crucial रहा है ये पूरे thesis वाले journey में. Right. Okay. So, what now? So, what is your faculty now? उनका point of view क्या है अभी? How are they planning to take this ahead? I don't think उनका कोई plan है, but definitely मेरा एक plan है. जब when I was speaking to a lot of Kashmiri Pandits on Twitter as well, that's how I think you and I met each other. Yeah. So when I was talking about my thesis to many people, a few people suggested that I should
change this thesis. I should convert this thesis into a book. Okay. So let's see. I mean, a book requires a lot of time. और Yeah. ऐसा और ऐसे ऐसे तो एक झटके में तो नहीं होता, because there was somebody who also said कि I'll get you a publisher, but I do not want to give out something जो मैंने सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए किया था, वो सिर्फ मुझे हाफ बेक नहीं देना है, because a Right. book will require a lot of research and Yeah, a lot. वो एक अलग लेवल हो जाता है. So let's see. I mean, I will, but फिलहाल like ये मोमेंट पे अगर मुझे पूछे तो ये मोमेंट पे like at this point in time I'm not on the brink of releasing a book or something like that. ये जो है वो फिलहाल अभी यही है. और I'll keep on researching more. I'll keep on adding newer topics to newer chapters into the thesis I have already written, क्योंकि मेरे पास base ready है. Right. तो शायद like maybe let's see, God willing, भगवान Yeah, करेगा. definitely. I think writing a book takes a lot of toll on you. Abhi, you've just uncovered the first layer. It's a very deep rot that you have to uncover. There are a million number of facts that you have to uncover, because this is just the tip of the iceberg. So I swear. In I fact, think मुझे डॉक्टर महेश कौल ने भी कहा था, like if you go out to look out for if you are in search of one story of a Kashmiri Pandit, you will have 5 million stories. absolutely. So I think there's one more book that I recommend people to read. It's by Rahul Pandita. It's blood clots in our blood clots in my moon, na? yeah. So Yeah. that's a very good book. That's a very hard hitting book. वो क्या है, एक sprint में you can't complete, because it's a very dark it's a very dark book, क्योंकि it hits you on so many levels, and it uncovers so many hard hitting truths कि it takes a toll on you, and you actually need some time to get used Over to it, yeah. and consume. In fact, to consume it over it once you've read it, but just to consume that book, you need a lot of time. It has uh, that much of facts which are yet to uncover. Absolutely. In fact, the thing is, मैंने कई बार मतलब मैं जब लिखती भी थी ना, I would still have I would have goosebumps, like, and I would not know how to like write the entire. I would not complete the sentence. मतलब अगर मैंने गिरजा टिक्कू के बारे में अगर मैंने एक सेंटेंस स्टार्ट किया है, या सरला भट्ट के बारे में सेंटेंस स्टार्ट किया है, there were times that I would just sit and stare at the screen, thinking कि मैं आगे क्या लिखूं, like इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं. Right. Like me as a woman, I get sick in my stomach when I hear such things. मतलब उन्होंने तो सहन किया है ये सब. So yeah. Right. So, just a couple of more things that I wanted to get from you. So, now that your thesis are ready, you've deposited, sort of shared it with your faculty. In fact, it's me placing on record that if they don't publish it, I am working on my website. I'll definitely publish it on my website. That's for Thank you so sure. much. Because there are very few people who actually, लोग तो अभी मानते भी नहीं थे कुछ टाइम पहले तक तो. इनफैक्ट द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एज ए होल, दे वर सो साइड लाइन कि लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ था, ऐसी भी कोई कम्युनिटी थी. So it's very generous of people like you who are actually coming up and standing up for our own people. It's at the end of the day, it's our own people whom we have to stand up to. Absolutely. और मुझे तो ये लगता है कि आज एक कम्युनिटी के साथ हुआ है, कल किसी और कम्युनिटी के साथ होगा. You Correct. never know In what fact, हो ही happens. रहा है. Yeah, in fact, हो ही रहा है. You see what's happening in Bengal, and then it just hits you कि अभी तक यार पिछले कितने सालों में तो कुछ भी नहीं बदला है. Absolutely. It's just reliving the past over and over again. So what's next now? Now that your thesis is with your faculty, what's your take on कैसा जाने वाला है? How are they going to accept? कुछ changes रहेंगे क्या? What's the final I don't think viewpoint कुछ from you? changes होंगे. Mm-hmm. I don't think कुछ changes होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे तो कुछ मुझे बताया नहीं कि मतलब it will require changes. वाइवा भी हो गया and everything was sorted.
Mm-hmm. But let's see. I mean, अभी फिलहाल मैंने thesis के लिए ना, like there was somebody who told me that, on Twitter itself, okay, we would like to read a book on this. So Okay. the person had requested me to convert the thesis into a book. Mm-hmm. So I don't know, and I was so overwhelmed by that comment that, the person said that, if you release it as a book, and Mm-hmm. even if you price it at the at if even if you price it at rupees 100, I'll buy 10 copies of it. Mm-hmm. So so yes, that is Right. there on my mind. But Mm-hmm. अब अभी मुझे है ना, like I don't want to give out this was a college project that I did. So Yeah. it's not something कि मतलब मुझे वही का वही दे देना है just because somebody said it and somebody Mm-hmm. was being generous with me and was agreeing to buy a book doesn't mean कि मैं कुछ मतलब एक बुक के लेवल का ना दूं मतलब ये तो मैंने सिर्फ Mm-hmm. एक रिसर्च किया था वो एक रिसर्च की तरह से रिसर्च किया था Right. लेकिन अ बुक टेक्स अ लॉन्ग टाइम सो आई वुड से दैट ये है दिमाग में Mm-hmm. लेकिन उसको टाइम लगेगा बुक को टाइम लगेगा सो Correct. या लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस Hmm. ठीक है. So uh, I think it's a very long journey anyways क्योंकि it's this is a very I ऐसा topic है which has not been explored till now. Of course, thanks to Vivek Agnihotri and his movie, now people have started discussions on this, but it's going to be a very long journey for you to cover and then to come up एंड something that इनफैक्ट is इवन फॉर द कम्युनिटी इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग बैटल क्योंकि yeah, अब तक तो मतलब उसको जेनोसाइड का नाम भी नहीं दिया गया है correct. I think सो आई थिंक we people are not acknowledging the genocide only. So it's एब्सोल्युटली taken 32 years to come to the for the fact to come on surface. Abhi to just एब्सोल्युटली acknowledging it'll take some time. Then making sure that the culprits are done justice. Also, uh, they're also hanged, if I can say that. So it's एब्सोल्युटली going to be a long journey, but yeah, hopefully that happens someday. And yeah, we can only pray because Supreme Court लगता नहीं है कि उस मूड में है अभी. So फिलहाल तो कोई मूड में नहीं लग रहा है लाइक एंड आई वाज yeah, वेरी डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ वर्डिक्ट दे केम आउट विद दैट आई थिंक 2 साल पहले हुआ था ना दे आस्क्ड यू yeah, द एंटायर कम्युनिटी टू दे आस्क्ड देम कि मतलब पहले क्या कर रहे थे आई थिंक ये रिस्पांस था उनका yeah. So there was a judgment where the judge said कि too much time has elapsed for the facts to uncover हाँ now. हाँ 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 And it's anyways it's going to take some time more till the facts are known to everyone. But I am hopeful with the fact that the likes of Yasin Malik and Bitta Karate are Yeah. jailed and उनके ऊपर मतलब कार्रवाई चल रही है as Right. मैंने लास्ट ये मई में अपडेट देखा था कि Hmm. यासीन मलिक के ऊपर दे वांटेड कुछ केसेस लगे हुए थे But in आई fact, थिंक it was not for the genocide part. I think वो terror funding case में it एब्सोल्युटली was some. टेरर फंडिंग केस का था बट Hmm. मतलब यू नेवर नो उसमें से क्या है लाइक Yeah. इन्वेस्टिगेशन होती है कि मतलब Hmm. वन थिंग लीड्स टू अनदर सो आई एम जस्ट होपफुल कि मतलब वो चीजें वन थिंग लीड्स टू अनदर हो और वी रीच दैट समवेयर मतलब कुछ तो आए हाथ में Right. Yeah. Hopefully that day comes. Uh, a community of 7 million people, around 700,000 people are waiting for that day. So in fact even I'm waiting for that day now that I'm a uh, part of invariably a part of the community yeah, uh, very the much. people have loved me a lot over here Very much so, yeah. so, So hopefully that day also comes. yeah So yeah we'll thank rejoice you. together we'll Yeah, celebrate together absolutely. We'll celebrate together. So yeah, thank you, Daria. It's been a pleasure hosting you, thank you and I hopefully thank you will see a sister lot more of each other in coming days. for sure thanks for having me हमारे पहले एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।